request is served, at that time that process from the waiting state will again join the ready queue, and from the ready queue it will be picked by the scheduler for execution. So this is how we have seen all the states. Yes, किसी को problem है यहाँ पे? Anybody is having any doubt here? Third year computer, are you there? Yes, ma'am. Hmm. Any Yes, doubt? ma'am. Any doubt you have? No, ma'am. Okay. So then we started. This is also a very important concept. कि आप, when you say that we have many times used this word, that is process switching. तो सॉरी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब क्या होता है, प्रोसेस स्विचिंग कैसे होता है, तो ये मैंने आपको कल एग्जांपल दिया. जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोसेसर दूसरा प्रोसेस जो हाई प्रायोरिटी वाला आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है वो हॉल्ट होगा, क्योंकि दूसरा प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन के लिए आने वाला है. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है, okay, the process which is getting executed, it needs to wait. At that time whatever is its process history, that process, all the details of that process will be stored in the PCB. Okay, that is your process control block. All the state information, its information will get saved into its PCB, and then the next process will be loaded for execution. Okay, after the execution, so ये कब होगा, अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ रहा है तो कुछ इंटरप्ट है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंटरप्ट फायर करता है, तो अगर ये इंटरप्ट आ रहा है तो जो एग्जीक्यूटिंग टास्क है उसको वेट करना पड़ेगा. ओके, वंस इट वेट्स इट नीड्स टू सेव. क्यों सेव करना है, क्योंकि जो भी अभी आ रहा है टास्क उसको एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे फिर से, मतलब प्रोसेसर को फिर से वही टास्क एग्जीक्यूट करना है जिसको उसने आधे में छोड़ दिया था एग्जीक्यूट करते वक्त. ओके, so it will save the contents, then it will reload firstly the new process which is required to execute. So PCB, उसका PCB block information update की जाएगी, and then it will be taken for the execution. Once it is executed, again there will be interrupt from the operating system. It will save the contents of this new processing block into the PCB of it, if it's PCB, and फिर जो पहले वाला प्रोसेस था वो एग्जीक्यूशन के लिए लिया जाएगा. ओके, इज दिस क्लियर, इज दिस कंसेप्ट क्लियर? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, then we came up with the two, uh, this, what you can say, concept which you need to remember, that what is your what is the term kernel. ओके, कर्नल मतलब क्या है, और आपका सिस्टम कॉल मतलब क्या है. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्नल? एज आई टोल्ड यू, कर्नल इज द कोर. इट इज द कोर, मीन्स इट इज द हार्ट ऑफ द your operating system. Kernel is the one who manages everything inside the what your system. ठीक है, तो कर्नल के बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो बहुत रिक्वायर्ड है. इट इज द ब्रिज बिटवीन द एप्लीकेशन एंड व्हाट प्रोसेसिंग वी आर परफॉर्मिंग. ओके, देन next, what is system call? Anybody who can tell me what is system call? Anybody? बोलो. Anybody? Okay, so system call, I have told you yesterday what is a system call. It is the mechanism through which the process and our operating system works or communicate.
समझ रहा है कि आपको जो भी कम्युनिकेशन इंटरनल होता है between whatever is the communication between the process and the operating system, it takes place through this system call. Okay, so the system calls, there are various systems. So system calls are nothing but the simple methods or functions which are designed for the communication purpose of your operating system and the process. Okay, there are various system calls which we will come across. Okay, then achieved. Okay, so thread is a basic unit of CPU utilization. ठीक है, समझ रहे हैं आपको थ्रेड मतलब क्या है कि इट इज नॉट अ लाइक not something externally you have to write or create. It is a part of that particular code or task only. The only thing is that if we are executing any task or any process, if the process is heavy, okay, so if it is doing multiple tasks internally, a single process with multiple functionality, so what we can do, we can assign the task to, we can create the threads, we can create these threads internally, and then the threads itself will be executed, and the performance of the system will increase. Okay, so that we have seen yesterday that how this thread works. Okay, so this is a single threaded process and this is a multi-threaded process. Okay, so as I told you that thread, this thread shares the code stack registers of the process. Okay, assist, here I have told you वो point नीचे है. हाँ, each thread belongs to exactly one process. ठीक है, एक थ्रेड एक ही प्रोसेस को बिलोंग करेगा, मतलब जैसे अभी ये प्रोसेस एक है तो ये थ्रेड इसी प्रोसेस को बिलोंग करेगा, इधर से वो इस प्रोसेस को नहीं बिलोंग कर सकता. ओके, देन no thread can exist outside the process. As I told you, threads are created only for the task to separate the heavy duty workload. So you can that process is divided into various, various threads बना दिए जाते हैं और फिर independently that threads execute. Okay, so it is not the part, it cannot be part of, if it is of this process it cannot be part of the other process. Okay, then threads are not independent of each others as they share. अभी यहाँ पे देखो ये क्या शेयर करते हैं. See, these threads are created as a part of that process. So no, whenever they are created, no separate allocation of some process, sorry, some sort of memory or some device is allotted to them. No, they are part of that process and they will share all these resources and all the space and all those things of the process which is assigned to that process. So no separate allocation for any thread is provided, it has to share it what is been provided for that process. Okay, so that is why they are not independent of each other. They have as they share code, data and os resources, etc. So they are going to share. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट हियर. ओके, जैसे मैंने आपको बहुत से एग्जांपल बोले आपको, जैसे अ बिजी वेब सर्वर, अगर कोई वेब सर्वर है जिसमें बहुत से क्लाइंट्स है. Okay, so to may have several clients concurrently accessing it. Okay, so see, a single web servers is accessed with multiple n number of clients. So the service is same, server same service provide करना है लेकिन बहुत से client है. So to serve all this many clients, you can create that many threads, and that threads will help out
टू टू सर्व ईच क्लाइंट. सो इससे क्या होगा, आपका पैरेलल टास्क हो रहा है, देर इज नो डेडलॉक हैपनिंग एंड ईच क्लाइंट इज गेटिंग सेटिस्फाइड. ओके, देर आर वेरियस एग्जाम्पल. जैसे हमने कल वर्ड का देखा, वर्ड हैज मल्टीपल थ्रेड्स, वन थ्रेड टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, अनदर थ्रेड टू प्रोसेस इनपुट एक्सेट्रा. ठीक है, we have seen this difference between process and threads yesterday. I am not going to tell you again and again the same things. This is just because today the strength is very less, so I will revise this. I will take few topics and we can, बिकॉज मंडे को प्रैक्टिकल लेना है ना, तो इस पे ही प्रैक्टिकल लेना है. तो क्या, अगर इधर भी वही समझना है और प्रैक्टिकल में आएंगे दूसरे बच्चे, तो वहां पे भी वही टाइम पास करना है क्या फिर? I have told you that we have to do practical of OS also on Monday. Only our execution of past 2 is remaining, and you can now perform that practical, and then we can do the OS practicals. But you people are not attending the lecture, then how to teach new topic, because that is related to practical. Okay. So see, overall, if this facility is being used by the operating system, surely it is having good advantages. Okay, so आपको समझ में आ रहा है कि प्रोसेस जैसी बहुत बड़ी चीज, जैसे आप जब कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस खोलते हो, तो उस ऑफिस में बहुत से फैसिलिटीज है, लेकिन हर एक फैसिलिटीज आप नहीं यूज करने वाले हो. लेकिन हर एक फैसिलिटीज को यूज करने के लिए अगर अलग अलग थ्रेड्स हो गए, तो क्या होगा, ये पार्ट अलग अलग, मतलब हर एक का काम अलग अलग करके रखा है, हर एक के थ्रेड अलग अलग बना के रखे हैं. So whenever you are accessing some particular thing, so others will not interfere or will not uh, मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे मैंने अभी ये ओपन कर रही हूँ, सो दैट थ्रेड विल ओनली वर्क एंड विल give the result what is. So the complete task or the process is not required to do this, but take care of this particular thing. लेकिन अगर थ्रेड्स नहीं होते, तो वो प्रोसेस का एक पार्ट कहीं तो होता जो ये एग्जीक्यूट करता. So that is why we are using threads. So threads has many benefits that we have seen yesterday. That is, thread minimizes the context switching, because thread doesn't require communication, or if mostly if it requires, it is within that process only. I told you that thread cannot be part of another process. सो उसको बाहर कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. जो भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा वो इंटरनल ही बाकी के थ्रेड्स से होगा. सो बाहर के थ्रेड से तो होने ही नहीं वाला है. बाहर का थ्रेड मतलब वो दूसरे प्रोसेस का थ्रेड है, मैं दूसरे प्रोसेस का थ्रेड एक्सेस नहीं कर सकती. सो इन दिस केस I don't have to do context switching outside my box or outside my process limits. So the context switching will be internally within this threads only. So that is why the context switching will not take time, as all the threads are internally present in the same area. That is one of the important uh, advantage. Then use of threads provides concurrency within a process. Concurrently वो execute हो रहा है, because of threads the work is being divided, parallel task will be executed. So this gives you the concurrency, feel of concurrency. There will be efficient communication. It is easy to handle and maintain and use, because economically it doesn't require anything else to be imported, or like any some software or something is required. No, it is internally managed. Utilization of multiprocessor architecture to a greater scale and efficiency. So it utilizes your multiprocessor architecture. This is the very मेजर डिसएडवांटेज दैट थ्रेड प्रोवाइड्स, दैट अगर आपने इस थ्रेड का पेरेंट क्लास, मतलब जो पेरेंट थ्रेड है वही डिस्कार्ड कर दिया, तो बाकी के जो चाइल्ड थ्रेड है वो स्टॉप हो जाएगी वर्क करने के लिए. जैसे मैंने आपको कल के एग्जांपल में बताया था, लाइक इफ यू हैव दिस 1 2 3 थ्रेड
and there will be a parent thread. So what will happen, this thread will work and it will, whatever is the functionality, it will give output to the main thread. Again this will work, it will give the output to the main thread, and then main thread will club all things, merge all things, and it will form a final output. So this is how the threading is done. But if that parent thread or main thread is only discarded or blocked, all this child thread is of no use. So that is the major disadvantage of thread. Okay, any doubt here? Any doubt? किसी को डाउट है कुछ? हेलो. No, ma'am. Okay. Okay, then we covered the multi-threading models. There are two models, that is user thread models and kernel thread models. Okay, user thread models, we have seen what is the advantages it is, and kernel thread, it has many advantages over your user thread model. So it is implemented in user level library. They are not created using system calls. Your user thread models are not created, मतलब user thread model create करने के लिए कोई system calls नहीं है. ओके, सिस्टम कॉल्स मैंने जैसे बोला है, सिस्टम कॉल्स मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कम्युनिकेशन या फिर जो भी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है उसके लिए सिस्टम कॉल्स, जो भी बातें होती है प्रोसेस से और प्रोसेस के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम कॉल के थ्रू होती है. तो अगर मुझे यूजर थ्रेड बनाना है तो मुझे सिस्टम कॉल की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ऐसा यहाँ पे बोला है. ओके, सो देर इज अ एक्चुअली इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग यूजर लेवल लाइब्रेरी. Okay, then thread switching does not need to call OS and to calls, because see thread switching जो भी होगी यहाँ पे उसका यहाँ पे as it is the user level threads. Okay, as it is user level threads, it doesn't require any switching with the OS and the kernel. The user level libraries and all the things will manage the working of this thread. ठीक है, यही हो गया यूजर. अभी कर्नल लेवल क्या होगा, उसके ऑपोजिट होगा. कर्नल लेवल क्या, कर्नल क्या करेगा, कर्नल थ्रेड्स will be managed by the kernel itself. It will keep track, there is a table, that is what I've told you yesterday, that there is a kernel table which holds all the threads which are created by the kernel in the system, and this table contains all the processing information of each thread. Okay, so this is how your kernel thread and user level thread works. So there are various models for the creation of user and kernel level threads. So one is many to many. In many to many there will be many user threads and many kernel threads. Okay, so in this type there are several. Okay, I have told you yesterday, the many to many model is a compromise between the two models. In this model, if any thread makes blocking of system call, the kernel can schedule another thread. तो यहाँ पे ये advantage मिला है हमें कि अगर if there is any blocking made by the user thread, the kernel thread will create a new thread for that blocked model. Instead of blocking the complete process, a new thread will be provided where this thing can be handled. So this is the one of the advantage. Okay, if any thread makes blocking system call, ठीक है, इसका मीनिंग अगर कोई थ्रेड ब्लॉक करना की कोशिश कर रहा है तो इससे क्या होगा, पूरी सिस्टम ब्लॉक हो सकती है. तो ये डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए कर्नल क्या करता है, अनदर थ्रेड वहां पे प्रोवाइड करके देता है जिससे आपका पूरा प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगा. यस, देन देयर इज मैनी टू वन. In many to one there are many user level process and only one kernel space, sorry, kernel thread. So many user level threads is being handled by only one kernel thread. Okay,
So this type of relationship is effective context switching environment. It provides an effective context switching environment easily implemented on simple kernel with no thread support. Okay. Then disadvantage is what in this model, disadvantage of this model is that since there is only one kernel level schedule at a given time, this model cannot take advantage of hardwares. Okay, so because there is only one kernel, the advantages of other hardwares cannot be taken. The next one is what? One to one. So this is simple to it is peer to peer like one to one communication. तो इससे क्या होगा कि जो भी थ्रेड है वो एक थ्रेड एक कर्नल थ्रेड हैंडल करेगा. So here in this type of relation, the running of multiple threads in parallel. Okay. And what happens? See, generation of every new user thread must include creating a corresponding kernel thread causing an अब क्या होगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि देखो अब मान लो ये एक नया थ्रेड बनाया इसने ये थ्रेड को कुछ प्रॉब्लम हो गया और नया थ्रेड बनाया तो जो नया थ्रेड बनेगा उसको हर एक को इससे रिलेट करने के लिए डिफिकल्ट जाएगा because it will again require the complete information of kernel लेवल थ्रेड टू बी यूज्ड. ओके, तो ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है. सी, द जनरेशन of every new user thread must include creating a corresponding kernel thread. ओके, मतलब यूजर जब भी यूजर थ्रेड क्रिएट करेगा उसको हर वक्त करस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड को ऐड करना पड़ेगा और उससे वो क्या होगा, that will take time and it is a kind of overhead there. So this is about the threads what we have seen yesterday. Yes, anybody, यहाँ तक किसी को डाउट है? Anybody is having any doubt? No one. Okay. So now, yes, this was all about. See, some things here are like known to you. अभी ये mapping, ये one to one ये models आपने सुने भी होंगे. But here you need to relate how it is internally being done. Okay. Then next comes our very important topic, that is process scheduling. Okay. Now, can you tell me the meaning of scheduling? Yes. Schedule. What is the meaning of schedule? Plan. Plan. Okay, correct. So in the case of your operating system, the process planning is very important because we have seen that in PCB, that whatever PCB structure we are maintaining, that is your process control block here, the process which will be coming will be placed in this format in this table. So this will make the processor easy to pick any process according to its state and its identification number. तो आपको ये समझ में आ रहा कि वहाँ पे एट ए टाइम बहुत से प्रोसेस आते हैं एग्जीक्यूशन के लिए टू द प्रोसेसर. सो which process to pick and how to pick, and after picking what to and how to start its execution, that requires process scheduling, a planning, a proper plan where every user is getting the benefit of utilizing the processor time. That is important here. आ रहा है समझ में? So process scheduling is the activity of process manager that handles removal of running process from the CPU and selection of another process on the basis of particular strategy. So on the basis of, see, strategy is very important. अगर आप किसी को execute, if you want to execute certain task, on what basis to execute it. Okay, so there will be various strategies. Like in your Python, you have learned there are various programming strategies, and how to implement those strategies is also
important. It specifically depends upon the application or the need of that application. ऐसा होता है ना. तो अभी इंटरनली प्रोसेसर कौन से बेसिस पे उस प्रोसेस को फर्स्टली पिक करेगा, ये एक पॉइंट है. और अभी जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको रिमूव करके दूसरा अगर ले रहा है तो उसमें कुछ तो होगा, उसलिए उसको दूसरे को एग्जीक्यूशन के लिए ले रहा है. और लेने के बाद उसको आगे उसको कैसे लेके जाना है तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगी. तो इन दिस वे वी शेड्यूल द और वी प्लान द प्रोसेस शेड्यूलिंग. Okay, process scheduling is an essential part of multi-programming operating system. Like you know that multi-programming system. I have told you that multi-programming operating system means what? That concurrently there are multiple programs available actually in the memory for execution. So how to deal with this and process scheduler फिर इससे कैसे deal करेगा? So that we have to learn in this process scheduling topic. So such operating system allow more than one process to be loaded into, as I told you, ये मैंने आपको बता दिया. तो अगर आपका मल्टी प्रोग्रामिंग है इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे प्रोग्राम पहले लोड करके रखो. लोड किया मतलब वो एग्जीक्यूट हो रहे, ऐसा नहीं होता है. एग्जीक्यूशन आपको पता है वो रनिंग स्टेट में कब जाता है प्रोसेस, जब वो प्रोसेसर उसको पिक करता है फॉर एग्जीक्यूशन. So it is not, concept is not like that. If multi-programming means I am just picking all the programs and just bringing into the memory. No, the execution is also important. So what does this CPU or your processor does? It brings up, it picks up the many programs for execution and it concurrently or simultaneously it manages the slots and then execute according to the strategies allotted to it. Okay, is the point clear of scheduling, process scheduling? समजलंय का तुम्हाला? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Also, I have just cleared you this point that to that the processor, sorry, no, every process when it is created, a PCB for it is created, that is process control block, and that blocks contains all the information, and it is also updated every time the process change its states or it has certain requirement or it is using or it is utilizing certain hardware. तो वो सब चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होगी और उस रिफ्लेक्शन की वजह से प्रोसेसर को आइडिया आएगी that what is the state or the condition of the process. Okay, so OS maintains all the PCBs in process scheduling queues. तो अभी ये PCB जो हम बना रहे हैं, हम हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग अलग पीसीबी मेंटेन कर रहे हैं ना. So who will take care of this PCB also then? Again, the OS also, OS has to take care. Okay, like suppose, see, for example, in a family, if a parent is having a child, it is the duty of that parent to educate that child. It is the duty of that parent to get him good admission. It is the duty of the parent to take care of that child, to give him time, to say give him whatever is his requirement. So everything that parent has to manage because it is its duty. Okay, the same goes here that OS is overall taking, OS is overall managing the thing. Like kernel is helping, it is the core who will be doing all these things, but OS is who is managing all these things. So certainly if I am saying that OS is means this PCBs are created for each process which you require for execution, तो वहां पे क्या होने वाला है, वो फिर से वो एक स्ट्रक्चर हर एक के प्रोसेस के लिए मेंटेन करना पड़ रहा है, लेकिन फिर से ये स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद उसका भी कौन केयर करेगा. सो ओएस मेंटेन्स ऑल द पीसीबीज इन वेयर all these PCBs are maintained by OS through this process scheduling queues. That is the job queue, ready queue, and device queue. तो आपको queue, what is queue? Tell me what is queue? What is queue? First in, first out. First in, first out. And what is stack? First in, last out. First in, last out. बराबर है.
Shruti Raut said that queue is first in, first out. Is it correct? Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. so what? See, that day also I've told you that you have learned all these things in data structures. Why you have learned? Are you getting? Because these things are actually they are implemented inside the machines which you are using, and they are processed and they maintain all the things in this way only. So that is why that data structure का एक इतना बड़ा आपको एक सेमेस्टर में चैप्टर है. ठीक है. So according to the requirement, now why they are using here queue and why not stack? लाइक इन द प्रोसेस स्टेट हमने ऊपर देखा होगा. प्रोसेस सॉरी प्रोसेस जब बनता है तो प्रोसेस का जो आपका एक पार्ट है टेम्पररी डेटा, वो कहाँ पे जाता है? स्टैक में जाता है. तो हमें पता है वो डेटा हमें टेम्पररी लगने वाला है, तो स्टैक में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. जो लास्ट में जाता है वही फर्स्ट में बाहर आता है ना. सो आई नो दैट टेम्पररी जो डेटा रहेगा वो मुझे जैसे मैं डालूंगी वैसे मुझे निकालना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ टेम्पररी थिंग विच आई लाइक. Internally there are a lot of swapping and all these things is required, so that time we can use. So what I want to say here you that the structure of data which we use, it is also means it is used according to the feature it gives. जैसे स्टैक वहां पे क्यों यूज किया है? क्योंकि वो टेम्पररी जो डेटा आएगा वही जो लास्ट में आएगा वही मुझे वो टेम्पररी रहेगा, तो मुझे वो पहले लेना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए. तो दैट इज वाई देयर द स्टैक इज यूज. कहीं पे हिप यूज किया है, अब यहाँ पे क्यूज यूज किए. जो भी जॉब्स जॉब्स मतलब क्या है? जो भी प्रोसेस आपके आएगी एग्जीक्यूशन के लिए वो क्यू के फॉर्मेट में डाले. अब क्यू क्यों डाला है बोलो? क्यू हम लाइन बनाते हैं. सो हाउ लाइन इज सर्व्ड, मतलब जो हम क्यू बनाते हैं, जैसे आप फॉर्म फिलिंग को आओगे अभी कल से परसों से जब से, so you will be standing there in a queue. So why it is done? जो फर्स्ट रहेगा उसको फर्स्ट सर्व किया जाएगा, बराबर है. तो दैट इज, अगर मेरे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब प्रोसेसर के पास अगर 10 या 10 से ज्यादा प्रोसेस आ रहे हैं, तो कौन से बेसिस पे मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ? सो एक साथ तो मैं सबको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेंटेन अ स्ट्रक्चर, आई विल कीप देम टेम्परेली इन दैट स्ट्रक्चर. So for that purpose here there whatever PCBs or whatever processes are created and whatever structure they are maintaining, that structure is being kept in a process scheduling queues. तो देर आर सेपरेट क्यूज फॉर अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स. तो हमने स्टेट्स देखी है आपके प्रोसेस की कौन से होती है, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट, ये स्टेट वो स्टेट. So that is what they are saying, that OS maintains separate queue for each of the process state, and PCB of all process in same execution state are placed in same queue. ठीक है. सो अभी पीसीबी ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सेम एग्जीक्यूशन स्टेट वाले एक क्यू में रहेंगे. जो रेडी क्यू वाले हैं वो रेडी क्यू में देखेंगे. सी यार हियर देयर इज द queues. So ready job queue, this queue keeps all the process in the system. Okay. Next ready queue, this queue keeps a set of process residing in the main memory ready and waiting to execute. जैसे मैंने बोला कि जो भी आपके न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस है, जो वेटिंग में है, जो मेन मेमोरी में है, वो ये सारे क्यू कौन से क्यू में जाएंगे? रेडी क्यू में. ओके. और जॉब क्यू में क्या होगे? सारे के सारे प्रोसेस जॉब क्यू में होंगे. लेकिन रेडी क्यू में कौन होंगे? जो वेटिंग में है और रेडी है एग्जीक्यूट के लिए. डिवाइस क्यू में द प्रोसेस विच आर ब्लॉक ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्टन रिसोर्सेस. एज आई टोल्ड यू, जिस प्रोसेस को, जिस जॉब्स को रिक्वायरमेंट है किसी हार्डवेयर की लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसको कहीं तो स्टोर करके जब मैंने आपको कल एग्जांपल दिया कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ रहा है, तो जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है उसको उसको वहीं पे स्टॉप करके
उसको दूसरा जो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो उस केस में क्या हो गया, ये जो हॉल्टेड प्रोसेस है उसको कहीं तो स्टोर करने पड़ेंगे पड़ते हैं। सो फर्स्टली इट्स पीसीबी विल बी अपडेटेड एंड दैट after updation it will be put it in certain queues. So this is all about your queues. Okay, so you can see how the representation of process scheduling is done. Okay, so all the process, all the execution processes whenever they are created, firstly कौन से queue में आ जाते हैं, job queue में। तो जॉब क्यू से जो भी रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए वो रेडी क्यू में जाएंगे। आयो के क्यूज, अभी देखो यहाँ पे सीपीयू मतलब ये डायरेक्ट प्रोसेसर है, रेडी से अगर कोई भी क्यू उठाया, सॉरी नॉट क्यू, एनी प्रोसेस इज पिक्ड फ्रॉम दिस रेडी क्यू एंड brought for the execution, it will be sent to the cpu. But while executing, if certain requirement of io comes, then it will go into the io waiting queue. Then after that request is served, that request will send, it will be sent to the io, and then io, with the io means with that requirement, it will join the ready queue, and that request will be served and आपका program या फिर process execute होके बाहर आएगा। Okay, so this is what that internally my process schedules. So what kind of scheduling I will, means that how that processor is hand, sorry not processor, operating system is providing the provision that each process which is coming for to me to get execute, it it should not wait for more time. It should get the access to whatever hardware it wants, or whether it is the processor, whether it wants some access for certain device, so it should not go into that waiting state. Okay, so for that this management is required to be done. So when so os is going to take care of all this management. For that management purpose, OS has made a strategy that whenever a process is created, a separate structure for it is maintained through PCB. That PCB contains all the information of that particular process. Okay, now again to simplify, the queues, queue structure is maintained so that अगर कोई वेटिंग वाला क्यू है, सॉरी अगर कोई वेटिंग वाला प्रोसेस है, सो इट विल एंटर इनटू दैट डिवाइस क्यू. Okay, if it is in ready to execute, it will enter into the ready queue. So in this way this scheduling is handled. Okay, then one more important thing is that os use different policies for each queue. Okay, अभी ये queues को भी manage करने के लिए os different policies use करता है, that we have to see in the coming slides. So this was about your process scheduling. Then there is a scheduler. Okay, anybody who knows about scheduler, what scheduler मतलब क्या होगा, अभी schedule करेगा ना, ठीक है, scheduler, anybody? Okay, Ma'am, it schedules yeah, it schedules schedules. different tasks. Yes, so schedulers are what? It is again a system software. It is a system software. This is very important. Not a heavy, or you can say like major. It is not playing any major role, but it is doing the task of scheduling, like which task to pick, कहाँ से किसको उठाना और कहाँ पे डालना, तो शेड्यूल करता है, like your buses. Okay, so this is a system software which handle process scheduling in various ways. Their main task is to select the job to be submitted into the system. That is what I've told you. That which job to select to get to the system for execution is decided by this scheduler. So schedulers are of three types. That is long term, medium term, and short term. Long term schedulers are for your process. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स आर फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग, मतलब प्रोसेस का शेड्यूलिंग कौन देखेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कौन देखेगा, किसका देखेगा, सीपीयू का. एंड मिड टर्म इज व्हाट, विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम द प्रोसेसर.
कौन से प्रोसेस को निकालना है प्रोसेसर से, उसका काम ये मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा. सो शेड्यूलर इज नथिंग बट इट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हैंडल द शेड्यूलिंग in various ways. Okay, so one is long term scheduling, which is done for your process and jobs. Second is short term, which is done for CPU. CPU को शेड्यूल करने के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, और मीडियम टर्म क्या है मैं बताती हूँ. ठीक है, इट इज जॉब शेड्यूलर एज आई टोल्ड यू. A long-term scheduler determines which programs are admitted for to the system for processing. As I told you that it is the one who decide which which program are taken by the system for processing or should be taken. Okay, so who is going to do, a job scheduler is going to select this thing. ठीक है, और ये सब चीजें कौन मैनेज करता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये शेड्यूलर है, तो ये शेड्यूलर फिर ये क्यूज, ये सब चीजें ओवरऑल तो these are all part of operating system. It is one of the software provided for scheduling, taking care of schedules in the operating system for processing of your process. So it selects process from the queue and loads into the memory, that you know now. The how the job will be selected, it will be taken from that queue and loaded into the memory for execution, and then from the memory it will be taken for the CPU for the final execution. Okay, here the objective is that बैलेंस मिक्स ऑफ जॉब, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेड्यूलर बस जिसको हार्डवेयर चाहिए वही 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 जॉब प्रोसेस कर रहा है. No, it should be balance thing should be done by the job scheduler. That is the primary object of job scheduler, is to provide balance of mixed job such as IO bound and processor bound. Okay, it is also it also controls the degree of multi-programming. Yes, because see, when there is scheduling, it is not that there will be one task or one program executing. There will be multiple things which will be handling. So a balance uh, access of that processor time to each process should be taken care by this long term scheduler. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जॉब शेड्यूलिंग करता है. शॉर्ट टर्म क्या करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग. एज आई टोल्ड यू, इट्स सीपीयू को शेड्यूल करना, वो था जॉब को शेड्यूल करना, मतलब जो भी प्रोसेसर के पास प्रोग्राम्स आ रहे हैं कौन से आने चाहिए, कौन से बेसिस पे आने चाहिए, वो कौन करेगा, लॉन्ग टर्म करेगा. अब आने के बाद सीपीयू उसको कैसे शेड्यूल करेगा, सो इट इज डन बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. Its main objective is to increase system performance in accordance with the chosen set of criteria. So as I told you, there will be certain criteria, on that basis this scheduling of the CPU is going to happen. Okay, it is the change of ready state to running state. Yes, because see यहाँ पे ready state होगा, किसको उठाना है, मतलब किसको किस प्रोसेस को उठाना है for execution is what, from ready queue to pick which job to pick from ready queue, and this is what it will be, a state from ready to running, means there will be the actual execution of process happening here. So it is change of running ready to running state that they have said. CPU scheduler selects a process among the process that are ready to execute and allocates CPU to one of them. As I told you that जो भी CPU शेड्यूलर का काम है उसको वो क्या करेगा, प्रोसेस जो भी एग्जीक्यूशन के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लगेगा, सीपीयू लगेगा, तो उसको पिकअप किया जाएगा एंड इट विल बी सेंड फॉर एग्जीक्यूशन. Okay, so it is one they are like dispatchers. Okay, simple. So remember that long terms are job schedulers, which decides which program to be admitted for the system, and short terms are the dispatchers which decides which process to execute next. Okay, so they take the decision which process to execute next. Here there is program, here there is process, difference समझो. Okay, and then the last one is medium term scheduler. Medium term scheduler is
it does the task of swapping. Like, see, as I told you that during the execution there will be certain situation where interrupts will take place. Interrupts मतलब क्या कि अगर मैं कोई execute कर रही हूँ task, means processor is executing certain task and suddenly an interrupt comes. So at that time the CPU has to switch. So at that time it has to remove the process which it is executing, okay, रिमूव फ्रॉम द मेमोरी एंड सो फिर इसको उठा के कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा. सो ये काम सब कौन करने वाला है, और जिसको लाना है एग्जीक्यूशन के लिए फिर से उसको वहां से उठा के मेन मेमोरी में लाना है. So that kind of thing is done by the medium term scheduler. So what I'm telling you here is it is a kind of task which is doing that is known as swapping. Because see, from main memory to again store that task which was currently executing, करंटली जो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा था उसको स्टॉप करके उसका स्टेट स्टोर करना है, मतलब उसको एक्चुअली वहां से रिमूव करके बाहर जाके कहीं स्टोर करना है, और जिसको एग्जीक्यूट करना है उसको वहां से लाके यहाँ पे डालना है इसके प्लेस पे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्वैपिंग. सो दैट task of swapping is done by your medium term scheduler, and it is uh, scheduler. This scheduler is in charge of handling swapped out process, as I have told you. Okay, so this is all about your process scheduling. So tomorrow, next lecture we will see parameters of process, and directly we will see all the algorithms which are required for scheduling, which are used for scheduling purpose. Okay, so this is about your फोर्थ यूनिट. अभी इसमें हमने पूरा प्रोसेस के बारे में पढ़ा है. अब लास्ट में सिर्फ इतना बाकी है कि ये जो शेड्यूलिंग होता है ये कैसे होता है, और शेड्यूलिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कौन से मतलब जैसे मैंने बोला ना दैट योर सीपीयू इज गोइंग टू परफॉर्म सर्टन, और इट इज गोइंग टू यूज सर्टन स्ट्रैटेजी टू अप्लाई how that process is going to execute further. So that strategies they have designed certain algorithms, and or the strategies we can say they are not big algorithms, they are certain strategies, and they are it is simple to understand. We just have to use it and your process will be scheduled and executed. Okay, so for today it is more than enough. We will continue in the next lecture. So just a second, I'll take that.